आई एम रिसर्च एनालिस्ट मोहित कुमार। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल फाइनेंस न्यूज ऑफ द वीक के साथ। सो द फर्स्ट पॉइंट, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस एंड टैरिफ आर स्टिल डोमिनेटिंग हेडलाइंस। अभी भी ये डोमिनेट कर रहा है पीस, ट्रम्प टैरिफ्स ग्लोबल हेडलाइंस में। यू नो it's getting really very difficult for an average company to forecast. किस बेसिस पर फोरकास्ट करे when taxes and tariffs are not clear? There is lot of uncertainty in the business environment due to this. लेकिन सिल्वर लाइनिंग क्या है? अभी ट्रेड टॉक्स होने वाले हैं लीडरशिप के बीच में, यूएसए और चाइना के टॉप लीडरशिप। दे आर मीटिंग इन डेज अहेड। लेट्स सी कैसा रहेगा। कमिंग ऑन टू पॉइंट टू, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट। ये बिग बॉइंग रिफॉर्म्स, आरबीआई की तरफ से इतना शानदार रेट कट एंड ऑल्सो सीआरआर में भी कट, 50 बेसिस पॉइंट तो रेपो रेट कट और सीआरआर में भी कट। तो इससे अगर 2.5 लाख करोड़ इस काइंड ऑफ कमिंग इनटू द सिस्टम, तो यू कैन इमेजिन कि इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलने वाला है इस एक कदम से। तो दिस वाज द बिग बैंग पॉलिसी जो आरबीआई ने किया बिजनेस के लिए, टू इम्प्रूव बिजनेस एनवायरनमेंट विद इन द कंट्री, एंड इट इज स्लेटेड टू बी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। ओके, मूविंग ऑन, फेड की तरफ से भी जो डेटा वहां पर देखा जा रहा है, इकोनॉमिक डेटा, इट्स नॉट वेरी एनकरेजिंग। जो भी डेटा वहां पर निकल कर आ रहा है, तो वहां पर भी traders and speculators and investors, they're kind of betting अगर फेड भी इंटरेस्ट रेट काटना वहां पर रिडक्शन शुरू कर दे तो लेटर दिस ईयर। सो दिस इज वन एक्सपेक्टेशन दैट दे हैव फ्रॉम देयर सेंट्रल बैंक। नाउ यूरोजोन से भी एक उनको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी उन्होंने 8th स्ट्रेट रेट कट किया टू सपोर्ट द इकोनॉमी। सो नेट फेड से भी यही आशा है कि वो भी रेट कट के लिए जाएंगे प्रीटी सून। मूविंग ऑन टू द key sector news. So Goldman Sachs, it's kind of providing equity to Jubilant Group to acquire Coca-Cola का Indian bottling plant. So this is the first one. The second one is very good. Decentro, जो कि एक इंडियन स्टार्टअप जो कि सिंगापुर में जाकर दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस, नाउ दे आर काइंड ऑफ रिटर्निंग टू कंट्री, और वो इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि अब इंडियन स्टार्टअप्स दे वांट टू रिटर्न टू द कंट्री एंड देन स्टार्ट देयर ऑपरेशंस, do that. The next piece is Amazon is laying off. So Procter and Gamble laid off last week. Now Amazon is joining the party. So there is lot of stress in that sense in the system. Now the next piece is, you all are aware, अभी Tesla और Donald Trump के बीच में जो भी ये online kind of sort of battle is going on. But understand, Tesla का share, if it's going down 14% and wiping out 380 billion dollars from the system is very negative, and it could have systemic pressures. So but there was this rebound, कल rebound भी हुआ, but then this should get sorted out, इससे पहले कि ये ज़्यादा फैले, it should get sorted out pretty soon. And the next one, the significant development is RBI को अभी भी बहुत कंसर्न है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक क्रिप्टो करेंसी का जो भी कंसर्न्स हैं आरबीआई को, वो जायज़ हैं, राइट? तो आरबीआई ने रिआइटरेट किया है कि वो कंसर्न्ड है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के। एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसमें ये सामने आया है कि 2024 और 25 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है, एंड दैट्स गुड फॉर द इकोनॉमी। एंड अगेन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेयर अर्थ मटेरियल, ये चाइना ने यहाँ पर भी कर्व लगाया है, और हमको देखना होगा
ऑटोमोटिव सेक्टर में इसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है. Now, friends, let's just focus on studying the broader market indices. First, let's just take the stronger of the two, Bank Nifty first. तो बैंक निफ्टी अगर आपने 6 जून को नोटिस किया तो ओपन रहा 55,699, हाई हुआ 56,695, low was 55,534, and then close happened around 56,578 odd levels. So this is about the OHLC. Now talking about the pivot points. So the pivot point, based on 6th June is 56,269. Right now the price is at 56,584. So till the time it's kind of above this pivot point, तब तक हम बोल सकते हैं कि yes, bullishness is still there. So based on the pivot points, कुछ हमने resistances निकाले हैं and calculation is right there in front of you. तो पहला resistance आएगा 57,000 odd levels पर, and the second resistance is at 57,429, right? Let's talk about supports. तो 55,584 पर फर्स्ट सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट आपको 55,109 पर मिलेगा, राइट? सो वी हैव डिस्कस्ड ब्रीफली OHLC एंड पिवट पॉइंट्स. नाउ लेट्स डू लिटिल चार्ट चेक, चार्ट स्टडी. लेट्स डू सम पैटर्न एनालिसिस. एक ये कप एंड हैंडल पैटर्न ये फुली प्लेड आउट हुआ. इट वाज फॉर्मिंग फॉर लास्ट फ्यू डेज. So this was the size of the cup and we projected here. तो यहाँ पर इसका ये टारगेट पूरा आया, right? But then what lies ahead? What's in store for us? तो पहले एक bullish scenario की बात कर लेते हैं. तो if the scenario is bullish, तो what is the pattern that we can now work with? तो अब हम देख रहे हैं एक ये flag pattern is kind of forming now. तो एक बिग ब्रेकआउट हैज हैपेंड 6th of June को. उसके बाद में प्राइस कंसोलिडेशन में चला गया, राइट? एंड मोमेंट जब ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर डिसाइसिव ब्रेकआउट देगा, देन इट कैन मूव अहेड फर्दर. तो अब वो कितना जा सकता है? तो लेट मी जस्ट टेक दिस टूल एंड clone it for you guys. I'll just clone this and put it here. Not here, but yes, this point, right? So in the bullish scenario, the targets could be, the size of this pole. तो अगर आप देखें ये pole और ये sideways consolidation में it's kind of a flag which is kind of generating. So what I'll do is I'll reduce it to lower time frame chart to tell you precisely कि ये पोल का साइज कितना आ रहा है, राइट? लेकिन उससे पहले लेट जस्ट टॉक अबाउट इफ बेयरिश सिनेरियो. तो बेयरिश सिनेरियो में इफ पिवट पॉइंट के नीचे प्राइस जाता है और वहां पर डिसाइसिव ट्रेड करना शुरू करता है, तो ऑल बेट्स आर ऑफ और बेयरिश सिनेरियो में हम दोबारा से आ सकते हैं, राइट? साइडवेज अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के बीच में ही प्राइस रहता है, राइट? वी हैव मार्क्ड फ्यू रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट, तो वो साइडवेज एक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा. तो अब लेट मी टेक यू टू द हायर टाइम फ्रेम सो दैट यू कैन प्रोजेक्ट फॉर योरसेल्फ, ट्राई एंड सी कि ये कितना टारगेट हो सकता है. लेट जस्ट डिलीट दी स्टडीज फ्रॉम दिस स्लाइड सो दैट यू कैन फाइंड इट clearly. So let me just take you to the 5-minute, the higher time frame chart. So yes, let's delete this also. So yes, so it's in front of you. Let me just zoom in a bit more, zoom out a bit more. So yes, so the target could be 600 odd points. Precisely I've kind of worked up target also. So it could be 600 point plus could be the move in the bullish scenario, right? So that's about the bank nifty. Now let's just talk about nifty. So in nifty, guys, let's talk about the formation first.
Now let's try and analyze what happened with Nifty 50 on 6th of June. Let's unlock our chart studies here. Right. So let me take this tool to analyze. Yes. So Nifty 50 opened at 24,748 odd levels. Yeah, this point. Now it made a high of 25,029.50, low of 24,671, and it closed above 25,000 levels, right? Talking about the important points, so pivot point that we can now work with is 24,901, right? This one. So till the time the price is above this pivot point, the important point, we can safely say we are still bullish. So based on the pivot point, हमने कुछ support और resistance भी निकाले हैं आपके लिए. Calculation is in front of you. The first resistance is placed at 25,131 level. The second resistance is at 25,259 odd levels. Talking about supports, the first support comes in at 24,773. The second support comes in at 24,543. Right. So let's talk about the three scenarios. Let's talk about the bearish scenario first, right? So if kind of if this pivot is not respected and price rates below this level, then it could be a bearish scenario, right? And sideways scenario could be if it consolidates between supports and resistance that we have kind of marked for you guys. But now let's talk about हमें चार्ट स्टडीज क्या कुछ ऑब्जर्व हो रही हैं चार्ट्स पर. तो let's just talk about that. So there is this inverse head and shoulder pattern which is kind of developing in Nifty 50 lower time frame chart. I'll just bring it to a higher time frame when we are working with the targets, but let's just focus here और देखते हैं कि कितना कैसे ये target, I mean the pattern is kind of forming. So this is this one shoulder, this is the head of this pattern, and then this is the other shoulder, and then breakout has happened from this product. So what to expect now? So hum like we always do, let's just try and clone this. We'll just clone this and simply put it at the breakout point here to find out the minimum targets that we can work with if this bullish scenario plays out. अगर bullish रहता है scenario, अगर ये breakout हो जाता है तो मिनिमम क्या टारगेट के साथ हम वर्क कर सकते हैं. तो लेट जस्ट टॉक अबाउट दैट. सो अगेन फॉर दैट लेट जस्ट रिमूव आवर whatever we have written here, right? And then this one also, and let me take you to a higher time frame, 5 minutes, so that the move gets projected. So precisely if you mark the bottom of this head until the neckline, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो yes, so 24,570 से लेकर के 24,830, तो it's about 250 points का a target, the projection that we can work with. So this is simply वो सिनेरियो होगा अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, तभी आप इन टारगेट्स के साथ you can study the charts further, right? So that's about it. This was about the Nifty. Thank you.